That's right. Sky247.net presents Not Just Cricket. And talking about the match that we just had, we just wrapped up match number 18 of the Indian T20 League, जो कि था मुंबई और बैंगलोर के खिलाफ, जहां मुंबई ने बहुत शानदार शुरुआत तो की, लेकिन फिर उनके पार्टनरशिप्स को जो तोड़ा है बैंगलोर ने, मुझे मुंबई की सड़कें याद आ गई। उतनी टूटी हुई मुंबई की सड़कें फिलहाल मेट्रो की कंस्ट्रक्शन की वजह से। वो तो सूर्य कुमार यादव है, जो कि उन्होंने पूरी तरीके से टाइम से पहले सूर्यास्त नहीं होने दिया मुंबई में। लेकिन Nikhil is here, Nikhil, and you were on commentary as well. Oh my God. Can you imagine? We've got these two big teams, the two most successful teams of the Indian T20 League, which is Chennai and Mumbai, and they've lost 4 back to back. देखिए, आज का दिन जो है ना, वो हम लोग कहते हैं हमेशा कि वो शानदार शनिवार रहेगा, लेकिन ये दोनों टीमों के लिए नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट रिधिमा, सबसे सफल दो टीमें, मुंबई 5 दफा चैंपियन और चेन्नई 4 दफा। वो मोमेंटम कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत पावर प्ले की अच्छी रही थी। वो 50 रन पे पहला विकेट गिरा, उसके बाद 12 रन में 5 विकेट, वो हबड़ा तबड़ी में 5 विकेट गिर गई। लेकिन कम से कम सूर्य कुमार यादव, आज वो सूर्य जो है ना वो चमका, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 151 रन बोर्ड पे ही रहे। इस टीम के सामने वो काफी नहीं थे। और जब गेंदबाजी भी करने आए, जब वो डिफेंड करने को देख रहे थे, थोड़ा सा रणनीति में लेके मैं थोड़ा सा हैरान था। और जो सोच थी, जब नई बॉल से बॉलर गेंदबाजी कर रहे थे, चाहे वो जयदेव उनाडकर थे, बेसल थम्पी ने जिस तरीके से पहला ओवर डाला था, वो मेडन ओवर था, वो लेंथ पे जसप्रीत बुमराह हिट नहीं कर रहे थे। वो यॉर्कर की चलिए आपकी ताकत है, पर नया बॉल थोड़ा सा विकेट को भी इस्तेमाल करने को देखे तो वहीं पे वो चूक हो गई, मुझे लगता है। लेकिन क्रेडिट वेयर इज ड्यू, आज भैया बैटरी में पावर था और लाल बैटरी बैंगलोर की बड़ी जोर शोर से चल रही है और बढ़िया अंदाज से दो खिलाड़ियों ने आज कम से कम अपना पहला अर्धशतक लगाया है इस प्रतियोगिता में। दोपहर में अभिषेक शर्मा ने और शाम को दिल्ली के अनुज रावत ने। बिल्कुल, अनुज रावत को देखकर मुझे बहुत मजा आया और उसके बाद इनके बारे में हम बात भी कर रहे थे, आप थे नहीं उस टाइम पर, कि अनुज रावत को बैक किया बैंगलोर ने, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले आपको मैच समरी दिखा देंगे, हम तो बोल ही रहे हैं, एक बार नंबर्स दिखा दें कि क्या दास्ता बयां कर रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी हियर। मुंबई posted 151, all credit to the way Surya Kumar Yadav played, 68 of 37 not out। वहीं अगर हम बैंगलोर की बॉलिंग की बात करें तो हर्षल पटेल और हसरंगा ने जो उनकी पार्टनरशिप्स तोड़ी है, यही वजह, ये दो शख्स हैं जिनकी वजह से मुंबई जो है बहुत लड़खड़ाई हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ अगर बैंगलोर की बैटिंग की बात करें तो अनुज रावत द यंगस्टर 66 of 47, what a knockout there by the youngster. I mean, of course, Anuj Rawat stood out. Who else stood out for you from this particular team, Nikhil? रन मशीन, द चेस मास्टर विराट कोहली, जब वो बैटिंग करने आए, वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, वो चौके लगाने लगे। उसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने कहा कि अनुज रावत को आप सिर्फ खड़े रहिए, विराट कोहली अपना काम करेंगे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जितनी अच्छी तरीके से वो ये चेस को ब्रेक डाउन करते हैं ना रिधमा, विश्व में कोई नहीं करता। 2 रन से चूक गए, 43rd उनका वो हाफ सेंचुरी होता है, एंड 18 वाइल चेसिंग। वो थोड़ा सा डिबेटेबल था, जब थर्ड अंपायर के पास भी गए थे, वो जब बातचीत कह रहे थे, शायद वो शब्द ठीक नहीं निकले थे। थर्ड अंपायर ने बोला था कि बैट और पैड का जब संपर्क हुआ तो वो साइमल्टेनियसली हुआ। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि वो इनसाइड एज को मान रहे हैं, तो फिर आपको बॉल ट्रैकिंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। अगर इनसाइड एज था तो मामला वहीं खत्म हो गया था। और शायद विराट कोहली इसलिए वो थोड़े से निराश भी थे। बट किसके नाम पे वो विकेट मिली? एक और यंगस्टर जो अंडर 19 विश्व कप में उभरता हुआ वो सितारा है, जो एबी बेबी के नाम से जाना जाता है, ब्रूविस, डेवॉल्ट ब्रूविस के नाम पे पहली विकेट वो किंग कोहली की। वो तो ये शाम कभी भी नहीं भूलने वाले। बट चेस का फर्क डाला विराट कोहली ने। जी, एक बार अनुज रावत के कंपोजर की आज बात करते हैं निखिल, जिस तरीके से आज उन्होंने पेस की अपनी इनिंग्स। प्लीज गो फॉर इट। सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा था, इसलिए आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। और शायद ये सिर्फ यहीं पे सुनेंगे हमारे जितने भी दर्शक है, इसलिए कहते हैं हमारे साथ जुड़ा जरूर कीजिएगा। क्योंकि आज विराट कोहली और अनुज रावत जब बैटिंग कर रहे थे ना, तो दोनों एक ही कोच के डिसाइपल्स हैं। उनके लिए सोचे कितना अच्छा दिन है राजकुमार जी के लिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली
ये और कहीं नहीं सुनेंगे, ये अंदर की खबरें हैं, वो सिर्फ यहीं पे आपको सुनाई देंगी। बट जैसे आपने फिर आपका सवाल कि उन्होंने किस तरीके से अपनी पारी को बिल्ड किया। जयदेव उनाडकट अपना पहला ओवर डाल रहे थे, तेज गति से नहीं डालते, और ये चीज अनुज जानते हैं, और उनकी ताकत जो है कि हाथ में नया बॉल है, थोड़ा सा बॉल स्विंग कराने को देखेंगे। उनको पहले से ही पता था कि बॉल जब स्विंग कराने को देखेंगे आगे डालेंगे, इसीलिए वो स्टेप आउट करके सामने 2 छक्के लगा दिए, ताकि वो चाहते थे कि जयदेव उनाडकट वो रिदम ना पा पाए जिससे बॉल मूव हो। उनको मजबूर किया कि वो फिर वो कटर डालने लगे या बैक ऑफ लेंथ, तो यानी कि बैट्समैन अपने कंफर्ट जोन में चला गया। ही वाज एबल टू चेंज द गेम प्लान ऑफ द बॉलर। युवा खिलाड़ी है, इंडिया अंडर 19 मेरे साथ थे, इंडिया अंडर 19 के कैंप में जब मैं कोच था, बट ही इज अ वेरी गुड थिंकिंग क्रिकेटर, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर। हमारी भाषा में क्रिकेट में कहते हैं रिद्वा कि किस तरीके से बॉलर से एक कदम आगे चलना। तो ये वो खिलाड़ी है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि इन्होंने वो 66 रन बनाए, बिकॉज इस खिलाड़ी के पास बहुत समय है और ये बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। होपफुली ही कंटिन्यूज दिस रन ऑफ फॉर्म बिकॉज he has a very, very bright future ahead. That's right. And Deep has joined us here. Hi, Deep. I was listening to you on commentary. Yes. It was fantastic. Thank you. You're being biased now. I'm sure you would have heard Nikhil is there. No, I did. I mentioned it. He's just sort of pulling your leg right here. But we were just talking about, of course, Mr. Rawat, the way he played today. And we were speaking about him in the preview as well, as to how, Bangalore shown courage to sort of back that youngster. And it sort of was a very fruitful day for the man. It is. And as Nikhil Bhai was mentioning, I mean, he's been around for a while and he's earned his stripes playing for Delhi. And this is not the first time that I've seen him bat like that. I'm sure Nikhil Bhai would tell you more, because he's done that for Delhi quite a few times in the past, especially in the last couple of years in white ball cricket. He generally doesn't open. He predominantly plays at number 5 or 4 or 5. But every time, and this is what I've noticed, every time his team's in trouble, he's got that attitude as well. He's got the right temperament, attitude. And I think what Bangalore is doing here is they're investing in this youngster, and rightly so, because we've seen that talent now. Now we've seen the talent being translated into to performance as well. And I tell you this, I honestly tell you this, he's one of the top wicketkeeper batters as far as next generation is concerned, right? If you're looking at who after Rishabh, well, one of the first names that comes to my mind is Anuj Rawat, and this is, I'm not saying here for the first time. I've been saying this for last while now. Yeah. No, of course, for sure, and of course we keep talking about Anuj Rawat because the kind of display of the kind of cricket that he's played today, and I'm sure there's more to come from the man. But let's just break down the innings and let's take a look at how Mumbai played the innings. Well, they went off to a great start, their best start of the season so far, 49 of 0 in the first 6 overs. But then 7th to 10th is where जो है हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से बैंगलोर को तोड़ फोड़ दिया, कोई भी पार्टनरशिप टिकने नहीं दी. 4 wickets there. That's why they lost that game there, Deep. Oh, 100% yes. I mean, that middle phase was so. I mean, I don't know. I mean, when you look at Mumbai, you understand. Listen, it's a champion side, right? It's a champion side, the most successful side in the tournament. There would be in some kind of a pressure, but you expect some of the senior players to soak in that pressure and then try and get the team out of that situation. But unfortunately, when I look at some of those players there, it's not. I mean, it seems like they're playing cricket with their hands tied behind their back, right? Yeah. I can understand for certain players, and obviously the youngsters in that middle order. There are a couple of the youngsters who never would have seen anything like this before, never would have experienced anything like this before. This level of cricket, the amount of pressure, the spotlight. So yeah, I mean, and I've said this before. I think pre-show Ridhima, I mentioned it, that this is a team in the making. It's in process at this point in time. You've got to give them a year maybe for them to actually come to their potential. But having said that, the pressure does not reduce, because again, we're talking about Mumbai here, who's won 5 championships. There's a pedigree there. So obviously the pressure will always be there, and and I think it's showing on some of those players' faces at this point in time.
Yeah, Nikhil. I mean, also in their body language, and like the way Deep mentioned, in their faces, we saw Rohit Sharma under pressure. He was frowning. The commentators team mentioned it on camera also. It's not very usual to see that side. नो नॉट एट ऑल एंड कहीं मैं पढ़ भी रहा था तो कह भी रहे थे कि बाकी टीम जब टीम मीटिंग ली थी उन्होंने कि आप अपनी जीत की जो है ना भूख दिखाइए। खिलाड़ी सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पटरी पे वो गाड़ी आ ही नहीं रही। 12 रन के अंदर वो 5 विकेटें गिरी, वो रन आउट हसारंगा ने जिस तरीके से डिवाल ब्रोविस को लेग बिफोर किया, वो आगे का बॉल पीछे खेले, पोलार्ड आए, पोलार्ड को लेग बिफोर किया, वो मोमेंटम मिल ही नहीं रहा। मैं तो दीप से पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा हैरान हुआ था कि सिर्फ 2 ही ओवरसीज के खिलाड़ी खिला रहे हैं। टिम डेविड की जगह आपने रमनदीप को खिलाया बगैर किसी भी खिलाड़ी का अनादर किए हुए। जब आप एक खिलाड़ी के पीछे गए हैं उसको थोड़ा सा बैक करने को भी देखिए कि अगर वो स्पिन के खिलाफ आउट हो रहे थे, कौन सी पिच पे खेल रहे हैं, कहाँ पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ सोच के उस खिलाड़ी के पीछे गए, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। और 2 ही ओवरसीज प्लेयर, आई एम लिटिल सरप्राइज वो जो कॉम्बिनेशन भी खिलाने को देख रहे हैं। Yeah, Deep. Yeah. मेरा मेरा बस ये कहना है, जैसे निखिल भाई ने कहा कि 2 ओवरसीज, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि 2 खिलाए या 4 खिलाए, लेकिन मुद्दा ये है कि जिसको आप खिला रहे हो इज ही बेटर देन द गाय सिटिंग आउटसाइड, राइट? अगर वो इंडियन हो तो इंडियन, ओवरसीज हो तो ओवरसीज। और टिम डेविड, जैसे निखिल भाई ने कहा, यू इन्वेस्टेड, कुछ तो सोच के आपने इन्वेस्ट किया, तो 2 मैच में रातों रात एक प्लेयर खराब तो नहीं हो जाता, राइट? अगर ठीक है, यही अगर एक पैटर्न आपको देखता है 3 मैच 4 मैच बाद एक पैटर्न देख रहा है कि भैया ये स्पिन पे फंस रहे हैं, फिर अलग बात है, देन यू टेक अ कॉल। बट अगर ये 2 मैच में पैटर्न सेट होता नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हम सिर्फ मैच टू मैच देखते हैं, राइट? वी फॉलो दीज प्लेयर्स मैच जब होता है, पीछे क्या हो रहा है, प्रैक्टिस सेशंस में क्या हो रहा है, इज ही लाइक नॉट बीन एबल टू प्ले द स्पिनर्स एट ऑल, आई डोंट नो अगेन। तो ये चीजें हमको नहीं पता लगता है यहाँ पे बैठे बैठे या मैच सिर्फ देख के। सो मे बी देयर इज समथिंग हैपनिंग, बट आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड एज वेल कि टिम डेविड है, इवन मैं कह रहा हूँ डैनियल सैम्स, हालांकि पिछले मैच में एक ओवर में प्रैक्टिस पड़ गया था, विच इज फाइन, आई मीन हो सकता है, खराब दिन हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे ही ब्रिंग्स समथिंग टू द टेबल एज अ बैटर एज वेल, यू नो, नंबर 7 पे बैटिंग करना है ऑल। सो टिम डेविड या डैनियल सैम्स, but they will, bottom line is, let's face it, Mumbai has to find those answers ASAP. I mean, time's running out. Yeah. I mean, 8.2 crores on Tim David. That was the figure. But having said that, if there were two people who sort of destroyed Mumbai's batting order, Hazaranga and Harshal Patel, the googlies and the slow deliveries, they read the batsman right, and of course there was deception there. Let's talk about them one by one. Deep on Hazaranga, the LBW master that he is. Yeah, and I can understand Brevis, because obviously he hasn't played Hasranga before, or quality of Hasranga before. He's one of the best match winners going around in T20 cricket at this point in time. Bowled beautifully again. I mean, and more so after giving 13 in his first over. He went for 13 in his first over, right? And after that, he comes back, and in the end, what, gives 15 in his next 3 and picks up those 2 wickets. So Brevis I can understand, but Pollard as well. You know, I mean, generally Pollard plays spin well, right? Especially, so he read the length incorrectly. At times, what happens is, if the trajectory is flatter, that can fool you as a batter, can fool you into playing off your back foot, even though it's a fuller delivery, right? So in this case, I guess that's what has happened. He thought, because of a flattish trajectory, thought it was something that he could manage. Obviously, he didn't read the googly, that's for sure. But also, I don't think he read the length correctly. But yeah, Hasranga, what a purchase. And yeah, after the first game where he went for a few, he's really come back strongly in this tournament. Yeah, I would say with Kyron Pollard, he delivered a stunner. You see, I'm also hosting WWE, so that was a Stone Cold Steve Austin stunner right there on the field. But, all right, Nikhil, like, I guess a stat which is very interesting. 35% of his wickets are LBW in T20. Yeah, no real surprises, because it just goes to show that the batsmen are not able to read him, and he's been able to break the defenses of batsmen. It's a different sort of bowler, you know, when you bowl a couple of deliveries towards the end of the innings, or some batsmen really trying to use the long handle, you get wickets caught in the deep or missed time. But bowled and
leg before wicket, just goes to show the quality of the bowler that he is. He possesses that couple of deliveries, the subtle variations that the batsmen are not able to read, and he looks to finish every delivery within the stump. That the batsman miss, the cliche saying that the bowler will hit. ये बड़ा फर्क पड़ता है, छोटी-छोटी चीजें. Yeah. Deep. No, just if I may add, is also that Sure. his leg spinner he's not a big turner of that leg spin, right? So he has to attack the stumps a lot more, and that's what he does. Obviously, second is what Nikhil said. So one of the reasons again he's so straight is because his googly also doesn't turn that much, neither does his leg spin, but does enough to beat the bat more often than not. But again, that's one of the reasons why he's so straight. Yeah. Also, if I talk about the other bowler, Harshal Patel, the early breakthrough that he had with Rohit Sharma and sent him back to the pavilion, I'm really impressed with the kind of combinations the man is trying. with हर्षल के साथ अच्छी बात ये है कि जब वो गेंदबाजी करने आते हैं ना, गेम की सिचुएशन पढ़ते हैं, विकेट से किस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, वो स्लोअर बॉल, सटल, और ये अलग अलग किस्म की स्लोअर बॉल डालते हैं. 24 गेंदों का वो एक स्पेल होता है, उसमें से रिधवा दीप 14 डॉट बॉल है, 14 डॉट बॉल है. पता चलता है कि किस तरीके से आप बैट्समैन को फंसा के रखें कि वो 14 गेंदे 2.2 ओवर आपने मेडन डाल दिए 4 ओवर के वो स्पेल में. पर्पल पटेल भैया पिछले साल जो विकेटें उन्होंने झटकाई है, तो उनका नाम हमने पर्पल पटेल रख दिया कि आते हैं बापू विकेट झटका के जाते हैं. बहुत सरस बापू. और एक चीज ये सोचिए आप कि रोहित को तो थोड़ी बहुत आदत पड़ी गई होगी ना, क्योंकि साथ में इंडिया के लिए खेलते हैं तो नेट में काफी बैटिंग करते हैं. आई एम श्योर नेट पे जब बैटिंग करते होंगे तो जरूर बोला होगा कि भाई अपने थोड़े स्लोअर वन भी डालना मुझे. तो मतलब यू नो दैट familiarity also doesn't stop him from picking up those wickets. अगर आप देखें आज भी he was way too early in his shot, he was fooled by that slower again. That's right. और आखिरी ओवर में भी 4 डॉट बॉल दिए उन्होंने. तो बट अगर हम मुंबई की बात करें तो there was one ray of hope there. That was that ray of sun, सूर्य कुमार यादव. I mean, अगर वो नहीं होते तो 151 सनसेट टाइम बहुत जल्दी आ जाता मुंबई में. Guys, I'll start with you, Deep. A word on Surya Kumar Yadav, the kind of cricket he's playing. Okay, so this is what I'm going to say. कि World Cup अगर team अगर बनानी हो, तो one of the first names would be his. As simple as that. I think Surya is right up there with one of the best in the world in this format. The array of shots that he's got. अगर कोई 360 degrees है इस time world cricket में, I think 2 नाम होंगे. एक जॉस बटलर, एक सूर्य कुमार. 360 डिग्री में कहीं पे भी खेलते हैं. he's got the power, he's got touch, and he's got that cricketing IQ, that sensibility. For example, wide Yorker डाल रहे थे, right? तो wide Yorker में I think was the 17th over or whatever. All he did was third man ऊपर है, slice it over. जोर से मारने की जरूरत नहीं, टाइम है, you know क्या करना है, use the pace. एंड यू नो ये चीजें जैसे हर्षल हो गए, सूर्य हो गए, ये रातों रात नहीं आता. ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो घिस के आए हैं इस लेवल पे. पिछले 7, 8, 9 साल से रणजी ट्रॉफी खेला है, वनडे मतलब विजय हजारे से मुश्ताक अली, तब जाके आज पहुंचे जहाँ पहुंचे. सो अगर लोगों को ये लगता है कि भैया ये आईपीएल आके ही 2-3 साल में बन गए बड़े, ऐसे नहीं हुआ है काम. यू नो घिसना पड़ा एंड देव गॉन थ्रू द रिगर्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट एंड नाउ देव रीच वेयर देव रीच, देव अर्न देयर स्ट्राइक. No, that's right. निखिल, बैट की जगह उनके हाथ में प्रोट्रैक्टर था, हर एंगल पे शॉट मारा उन्होंने. आप उनको बैटिंग करते देखे ना, तो बड़ी स्मार्टली बैटिंग करते हैं. जब पेस बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, किस तरीके से पेस बॉलर की पेस को यूज करते हैं. हमेशा बिहाइंड द विकेट रन बनाने को देखते हैं. स्पिनर आते हैं तब वो सामने मारने को देखते हैं. तो अभी जो दीप बता रहा था ना कि थर्ड मैन के ऊपर से वो स्लाइस करना, वो बॉलर की पेस का यूज करना. अगर क्रीज की गहराई में खड़े होते हैं, उन्होंने आज एक वो मिनी हेलीकॉप्टर पिक किया था कि वो यॉर्कर ठीक नहीं पड़ी थी, वो भी बिहाइंड द स्क्वायर गया था. तो वो मोमेंटम बॉलर की पेस से मिलता है. समझते हैं कि वो मेरी चद्दर कितनी बड़ी है और मैं कितनी वो छलांग लगा सकता हूँ. सो ही बैट्स एंड विद दैट सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंटली, विदाउट अ डाउट. यू नो पिछले मुकाबले में भी वो अर्शतक, आज भी वो अर्शतक. मेरे लिए तो भैया इनको हर फॉर्मेट में आप खिलाइए और इस किस्म के फॉर्म में है
रिद्धिमा बड़ा फर्क पड़ता है, एक बैट्समैन जब अच्छे फॉर्म में चल रहा होता है ना, तब उसको क्रिकेट मिलती रहनी चाहिए। आप उनको जी बाहर बैठा देंगे ना तो भाई वो जंक लग जाएगा। तो आई होप सूर्य कुमार यादव को ना बादलों से मत आप ढकिएगा, उनको चमकने दीजिए, उनका ये समय चल रहा है। बिल्कुल, and our social media channels also agree with you, gentlemen. Let's take a look at the social tracker powered by Sky247.net. Oh, let's take a look at all the tweets that came in. And here we go. We've got the only other time CSK lost 4 IPL games in a row was from 21st March 2010 to 28th March 2010 against Punjab, Bangalore, Mumbai and Rajasthan. However, CSK won their first IPL title the same season. ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो क्रिकेट फैंस तिकड़म लगाते हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया है। क्या लेकिन इस साल कर पाएंगे दीप? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आई डोंट नो, इनफैक्ट मुंबई की अगर हम बात करें कि जनरली दे स्टार्ट स्लोली एंड एवरीथिंग एल्स, बट वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है हर एक सीजन की तरह, बिकॉज आई थिंक द अदर टीम्स आर लुकिंग बेटर। यू नो, इसके पहले मुंबई का भी देख लें, चेन्नई का, द टीम वाज ऑलवेज गुड, दे weren't परफॉर्मिंग। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो लुकिंग एट द स्क्वाड, आई थिंक द अदर टीम्स हैव अ स्ट्रॉन्गर स्क्वाड एंड दैट्स द रीजन इट्स गोइंग टू बी दैट मच। क्या वो नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, बट इट्स गोइंग टू बी दैट मच मोर डिफिकल्ट दिस सीजन फॉर बोथ दीज। Yep, that's right. Let's take a look at more tweets. I think there's one tweet for Surya Kumar Yadav also. And here we go with the World T20 and 50 over in the next year. Surya Kumar Yadav should be one of the first names on any white ball. Yes, Deep, exactly what you were saying. Of course, Nikhil back. Yes, I mean, yeah. All right, we completely agree with you. All right, here's another one. King of variations, Harshal Patel has bowled a gem of a spell tonight. He picked up 2 wickets and bowled a brilliant last over, which only went for 7 runs. Sorry, एकदम अंदर घुस के देख रही थी, कुछ चश्मा मुझे। Sorry about that. All right, yeah, we were talking about Harshal Patel, of course, the variations. First of all, thank you for all the tweets and everything that has been happening on the social, because we are keeping a track on it. That's why this is our social tracker powered by Sky247.net. ऑलराइट, एक बार जो हमने पूरी की पूरी दास्तान बयां कर दी है इस पर्टिकुलर मैच की, जो कि है मुंबई और बैंगलोर, एक बार नंबर्स पे भी नजर डाल देते हैं. दिस इज द नंबर्स ट्रैकर पार्ट बाय Sky247.net. लेट्स टेक अ लुक एट द नंबर्स हियर. Okay, let's take a look. I think we've got the points table here, and at the end of the match that we had tonight, we've got Kolkata right on top, followed by Gujarat, Bangalore on number 3, Lucknow on number 4. कल खेलने वाले हैं वो राजस्थान के अगेंस्ट. चेन्नई का तो काफी बुरा हाल है और उसके ठीक पीछे मुंबई. ये दोनों टीम्स जो है, ये यूजुअली हमें आदत है इनको एकदम टॉप में देखने की, और ये एकदम नीचे आ गए. दैट्स द ब्यूटी ऑफ the Indian T20 League. Here is a look at the most wickets. Wow, any interesting name that stands out there for you, gentlemen? Any surprises? Not really, but what's interesting to see. Sorry. हाँ, बताएं. No, go deep. मुझे यही लगा कि the interesting part is कि there are 3 wrist spinners, which is not a surprise. लेकिन कभी-कभार आप ये भी start of the season, a lot of people were thinking कि यार वानखेड़े, ब्रबॉन, पुणे छोटे मैदान है, क्या लेग स्पिनर्स या स्पिनर्स इन जनरल क्या उतने कारगर साबित हो पाएंगे एंड ऑल दैट, यू नो, इन द हाई स्कोरिंग विन. बट इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी हाउ स्पिनर्स इन जनरल, एंड दिस इज अगेन द स्टोरी ऑफ T20 क्रिकेट एक्चुअली. तो T20 पहले आता, सब कहते हैं यार स्पिनर्स तो गए, बट दे सर्वाइव्ड, राइट? नॉट जस्ट सर्वाइव, दे थ्राइविंग. So it's just good to see कि, you know, spinners every now and then, every time you kind of say कि spinners might not be that effective, but they find a way. Yeah, should be happy, Nikhil. No, absolutely यार, बड़ा फर्क पड़ता है. मैं तो बड़ा खुश हूँ कि जिस तरीके से उमेश यादव भी गेंदबाजी कर रहे हैं, वो विकेट चटका रहे हैं, सबसे ज्यादा रन्स, जॉस द बॉस, ये अलग किस्म के फॉर्म में चल रहे हैं. ये खिलाड़ी जो है वो मुकाबले जिताए जा रहा है. स्ट्राइक रेट 143 की. शुभमन गिल वहां पे भारतीय खिलाड़ी, बट जॉस बटलर उस किस्म का खिलाड़ी है, जब फॉर्म में होता है तो वो एक लंबी पारी खेलने को देखता है. बहुत से खिलाड़ी जो होते हैं जो सिर्फ पावर प्ले में 130 135 के स्ट्राइक रेट पे स्टार्ट देके आउट हो जाते हैं, ये उनमें से एक खिलाड़ी है
जो एक स्टार्ट मिलता है ना, तो फिर ये गेम को और गहरा ले जाते हैं। फिर इनका वो स्ट्राइक रेट जो है वो पावर प्ले के बाद वो कम नहीं होता, उसी मोमेंटम में बैटिंग करते हैं, तो उनके साथ जो बैटिंग कर रहे होते हैं ना, उसके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। तो जॉस बटलर का ऐसे रन बनाना, तभी वो पता चलता है कि राजस्थान का वो जीतने का रहस्य क्या है, क्योंकि उनका एक मेन खिलाड़ी है, इस किस्म से रन बना रहा है। बिल्कुल, and that was numbers tracker powered by Sky247.net. देखिए जॉस बटलर जो है वो कल आपको मैदान में जरूर नजर आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैच की बात करते हैं जहां पे कोलकाता है और दिल्ली है, which is happening at the Brabant Stadium in Mumbai, and then we'll move on to वानखेड़े जहां पे राजस्थान भिड़ेंगे लखनऊ से, and Kolkata of course is coming from that big victory against Mumbai, which is looking really good, backed by the competitive spirit of Pat Cummins. Yeah, I mean, listen, KKR is the team to beat. ऐसा मुझे देख के लग रहा है. Even though their top order has not fired, Kolkata's top order has not fired, so their top 4-5. But just imagine if they start firing, that's going to be one really good team. And Shreyas Iyer and Rishabh Pant. ये देखने में मजा आएगा निखिल। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आपने कहा है ना, ये छुपी हुई बात जो बड़ी जोर से बाहर से निकल के आई है, ये दो हाथ कर रहे होंगे दो हाथ कर रहे होंगे कि भैया ये मुकाबला तो हमने जीतना है। वो चोट लगी, कप्तान बदला, वो चोट लगी, बोला नहीं जी मुझे मत रखिए, मैं जा रहा हूँ ऑक्शन में, कप्तानी उधर की, लेकिन मध्यक्रम मजबूत नजर आ रहा है। एक कम था और असल द मसल जो पैट कमिंस जैसे बैटिंग करने लग गए। जी बिल्कुल, और मजबूत तो वैसे लखनऊ भी नजर आ रहा है। I mean, Rajasthan had a good start. They've not been able to build on it, but Lucknow is looking pretty good. Nikhil? जी, इसमें कोई राय नहीं है भाई। केएल राहुल, क्विंटन डीकॉक जिस तरीके के फॉर्म में वो चल रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक किस्म के खिलाड़ी। और मुझे खुशी इस बात की है कि केएल राहुल को आप बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं ना, गेम को कंट्रोल करते हैं। वो एक बड़ी इनिंग अभी वो आने को है, बट वो बहुत अच्छे से वो अपनी टीम को इकट्ठा करके, एकजुट करके चलाते हैं टीम को। शांत स्वभाव के कप्तान है। जी बिल्कुल। दीप, Rajasthan's chances in this particular match? Very good, because they're in form, they're playing good cricket. But the thing is, equally matched in Lucknow. And what I really like about Lucknow is, listen, I've always been a big fan of Gautam's leadership quality. I think that's also coming to fore in this franchise. And what is more exciting, obviously, you know, KL will, on his worst year, he will get you 400, 450 runs. So, yeah, more than KL Rahul, it's how Deepak Hooda has taken his chances, how Ayush Badoni is doing so well. So, yeah, I mean, for me, Lucknow is extremely exciting. And so is Rajasthan. There's no two ways about it. And, but I don't know, somehow there is a Bengali connection there, Bengal connection as well, because it's owned by a man from Bengal, as you know. So, yeah, and I happen to know him as well. So, there is a Bengali connection and everything. So, yeah, you know, might go for Lucknow. Perfect. So, listen, we're going to talk about it more tomorrow, where we'll have a preview for sure. And, you know, you can definitely join us for a preview right here. This is Sky 247 presents Not Just Cricket. I hope you guys sleep well, because both of you got your heart broken. Both of you went with your heart and supported two teams that lost. And I went with my mind and Bangalore won. So I'm going to sleep really peacefully, guys. But I'm going to see you tomorrow. And I hope you know, actually go with your mind tomorrow, backing the teams and not your heart. Because clearly दिल टूटते हैं यहाँ पर। यही तो मजा है रिधिमा, दिल टूटते हैं तभी कहते हैं ना, predictability goes out of the window when it comes to T20. That's true. That is so true, and we saw what Tewatia did. So there is no prediction here. All right, thank you, gentlemen. Thanks a lot. Always a pleasure. And a big thank you to all of you. Thank you so much for joining us, and see you all tomorrow. Until then, it's a good night.